अच्छा, एनर्जेटिक्स के अंदर यू हैड योर डेफिनेशंस, तो उसके अंदर ना लॉट्स ऑफ डेफिनेशंस। पहले तो पुरानी डेफिनेशंस एएस का रिवाइज कर लें क्विकली कि देयर वाज नंबर 1 डेल्टा एच एफ। अच्छा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो था दैट वाज कि उसके अंदर मैं बस उसकी ब्रीफ समरी लिख रहा हूँ कि एलिमेंट्स and they're supposed to be in their standard states, and they would go on to produce 1 mole of a substance. So in any reaction, as a 1 mole of substance. So in any reaction, if this is happening, then the enthalpy change of that particular reaction is going to be called delta HF. And it could be endothermic, it could be exothermic both. Okay, for example, there's carbon reacting with oxygen to produce carbon dioxide. So this is reaction की जो enthalpy change है, that's called enthalpy change of formation. 1 mole of substance is formed from its constituent elements. फिर आपके पास था कि और कोई भी कर लो 1 mole of CH3OH methanol, so it's going to be produced from its elements which are carbon, hydrogen and oxygen. इसको 1 mole रहना चाहिए, ठीक है? So this would be half, ये 2H2 और एक ही कार्बन है, ठीक है? अच्छा, number 2 is अच्छा number 2, अच्छा फिर आपके पास एक enthalpy change of combustion था, ठीक है? Quickly going through that, enthalpy change of combustion was कि you have 1 mole of a substance. So you have 1 mole of a substance, any substance, but it has to be combustible. So you have 1 mole of a substance and it burns in excess oxygen. Any complete combustion, excess oxygen, O2. And it's going to be producing, okay, 1 mole of a substance burns in excess oxygen and produces whatever जो भी flammable substance produce करता है, ठीक है, carbon dioxide, etc., water, यहाँ पे लिख देते हैं, बस burns in excess O2 था, ठीक है? हर दफा वो substance कुछ और ही produce करेगा. तो it depends whatever it produces. मतलब कार्बन को बर्न करोगे 1 मोल एक्सेस ऑक्सीजन में तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा. तो द रिएक्शन वुड बी कॉल्ड, इसकी जो एंथैल्पी चेंज है दैट वुड बी कॉल्ड द एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन. ठीक है, इट वुड बी नोन एज डेल्टा HC ऑफ C. मीथेन होगा तो फिर उसको एक्सेस ऑक्सीजन के अंदर बर्न करोगे 1 मोल को, तो इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड देयर वुड बी 2 मॉलिक्यूल्स एंड दिस वुड बी 2 O2s. ठीक है, सो इसको आप कहोगे एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन. सल्फर को बर्न करोगे तो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, तो इट वुड बी producing SO2. Anyways, number 3 is enthalpy change of neutralization. Enthalpy change of neutralization है कि when you have acid or base react करते हैं, ठीक है? So there's an acid base reaction happening और उसके अंदर 1 mole water produce होना चाहिए. That should be the product. If that is the product, then it's going to be called the enthalpy change of neutralization. So any acid or base, if it reacts, example is NaOH plus H2SO4. So it produces Na2SO4 plus H2O. This is going to be 2NaOH and 2 H2Os, ठीक है? लेकिन यहाँ पे गलती होगी है कि 1 mole water produce नहीं हो रहा. So this would be called 2 times the enthalpy change of neutralization, क्योंकि amount double होगी है. Or you can divide the whole equation by 2. अच्छा, enthalpy change of neutralization का होता है कि always -57
kilojoules per mole. It's always exothermic. ठीक है, the first one ये भी exothermic था, always negative. Enthalpy change of combustion जो था ना पिछला वाला, that was also always negative. Enthalpy change of neutralization is also always negative. हमेशा energy release होती है when a neutralization reaction is taking place. It's going to be minus 57 kilojoules per mole, always minus 57. तो अच्छा, तो always minus 57, and the thing is कि uh, कि इसकी value, this is minus 57 for strong acids and bases. Slightly less than minus 57. Yeah, slightly less exothermic. For weak acids and bases. As some energy is needed for ionization. ठीक है, some energy might be needed for ionization. Achha, but I'll explain this. Why is it always minus 57? Because no matter what the acid is, no matter what the base is, the reaction जो end में होगा ना, that would be exactly the same. Acid H plus 1 ions produce करता है, base OH minus 1 produce करता है, they combine to form water. So there's bond formation happening. टूट कोई नहीं रहा, bond form हो रहे हैं. ठीक है, OH ions, और तो इसलिए it's exothermic and it's always the same value. No matter what the acid is, no matter what the base is, it's always the same value. बस ये कि अच्छा, always the same value. The only thing is कि weak acids और weak bases जो है ना, वो H plus 1 और OH ions इतना readily produce नहीं करते. So some energy gets used up in to ionize them. तो इसलिए उनकी value जो है ना, वो थोड़ी सी different होती है, थोड़ी सी, very slightly. अच्छा, then number 4. Now number 4 is, and let me put this in. अच्छा, number 4 is कि it's enthalpy change of atomization. तो उसके अंदर क्या होता है? enthalpy change of atomization में कि element, it is in its standard state, and it ends up producing 1 mole of gaseous atoms. So what you're basically doing is you're breaking bonds. Bond breaking is taking place because you're breaking the element into its atoms. So it's always endothermic, it's always positive. So for example, if you have an element, sodium है, and you change it, you break all its bonds, जितने भी metallic bonds उसके अंदर, and you break it into its gaseous atoms. ठीक है, so that is, अच्छा, that is enthalpy change of atomization. Or if you have iodine, solid है, उसके bonds तोड़ोगे तो iodine के gaseous atoms बन जाएंगे. ये 1 mole होने चाहिए, तो this should be half I2. ठीक है, so this is what enthalpy change of atomization is. फिर उससे आगे number 5. Number 5 is, अब उस पे आ जाते हैं lattice energy पे. अच्छा, lattice energy is ये A2 का specifically, that is, it is the energy that is released when 1 mole of solid ionic lattice is formed
is formed from its constituent gaseous ions. ठीक है, so this is lattice energy, and lattice energy in simple words here कि ions है sodium ions Cl ions और NaCl बन गए solid. ये ions जो है ना they're gaseous का मतलब they're not bonded to anything. This has to be 1 mole. The ionic lattice होना चाहिए that should be 1 mole. Ions जितने मर्जी हो. For example, if there's another substance like magnesium, कोई भी कर लें, sodium phosphate कर लेते हैं. Solid 1 mole ionic lattice. So it would be formed from 3 sodium ions in gaseous state and 1 phosphate ion in gaseous state. So this is sodium phosphate. So this is sodium phosphate. And it also has to be 1 mole. ठीक है, तो अब पहले इसके थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं लैटिस एनर्जी. इट्स ऑलवेज एनर्जी लीस्ट, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. व्हाई? क्योंकि gaseous ions are forming bonds, so there is bond formation happening. I said there is bond formation that's happening. The next part is कि strong lattice होगा. So if you have a strong lattice that is going to be formed, तो more exothermic lattice energy, greater lattice energy, and vice versa. Weak lattice होगा तो lattice energy कम होगी. So how do you figure out कि is it strong lattice energy or weak lattice? तो strength of lattice दो चीजों पे depend करता है, and the strength of an ionic lattice. Now it depends on two things. One is, for example, I have NaCl. तो जो लैटिस होता है ना आयोनिक लैटिस, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, मेटल आयन नॉन मेटल आयन दोनों होते हैं. दे ऑल अट्रैक्टिंग ईच अदर. एक और लैटिस उठा लेते हैं कि Mg2+, O2-, MgO. Oppositely charged ions, they're all attracting each other. So you have these two lattices. Which one is stronger? The strength of lattice depends on two things. One is the number one is charge. Actually, there's a thing called charge density. ठीक है, there's a thing called charge density. उसके ऊपर depend करता है. Charge density is charge over ionic radius. ठीक है, that is what charge density is. अच्छा, इसके ऊपर depend करता है कि, well, in simple words, if there is greater charge, then there's going to be more attraction. तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे you have NaCl, तो उसमें चार्ज कम है, Na+1 है, Cl-1 है. तो जो आपका नॉर्मल टेबल सॉल्ट है वो इतनी कोई स्ट्रांग नहीं होती. इट्स वेरी इजीली, यू कैन ब्रेक इट वेरी इजीली. लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड है, +2 है, -2 है, दैट्स वेरी स्ट्रांग. ठीक है, उसी तरह मार्बल एक सॉल्ट है. मार्बल इज कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम इज 2+, कार्बोनेट इज -2. तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन होगी, that is also going to be very very strong. ठीक है, calcium 2+, carbonate -2, so they're going to be very strongly attracted to
ईच अदर। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी, उतना स्ट्रॉन्ग लैटिस होगा। तो मार्बल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो हाथ में नहीं टूटेगा। टेबल सॉल्ट जो है NaCl, that can be broken down or crushed very very easily. तो ग्रेटर चार्ज मोर अट्रैक्शन। और दूसरा होता है कि आयन का साइज अगर स्मॉलर होगा ना, तो स्मॉलर आयन्स होंगे तो इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक रेडियस है, ठीक है। स्मॉलर आयन्स होंगे तो देयर दो तीन चीजें होंगी, मोर टाइटली पैक्ड क्लोजर टुगेदर, तो ज्यादा अट्रैक्शन होगी। मतलब छोटे आयन्स होंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे के बहुत करीब करीब होंगे, सो मोर टाइटली पैक्ड एंड चार्ज इज मोर concentrated on a smaller ion, या is more effective on a smaller ion. तो जितना छोटा आयन होगा ना उतना ज्यादा इफेक्टिव चार्ज होगा। तो इसलिए इट्स बेसिकली डिपेंड्स ऑन द रेशियो ऑफ द चार्ज टू द आयनिक रेडियस। कि आयन छोटा हो और उस पर चार्ज ज्यादा हो तो उतना स्ट्रॉन्ग लैटिस होगा। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आयशा, इज दिस क्लियर? अब्दुल्ला, क्लियर है? जी। तो उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी, और लैटिस एनर्जी की जो वैल्यू है दैट रिवॉल्व्स अराउंड well approximately, जो लैटिस एनर्जी की वैल्यू है समवेयर अराउंड -800 से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे इसके ऊपर, तो approximately let's say 5000. Most of the time it's hovering around -2000 to -3000. ठीक है, लेकिन ये लैटिस एनर्जी की फॉर मोस्ट आयनिक कंपाउंड्स दिस इज द रेंज। इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि जब क्वेश्चन आए तो जब आप कैलकुलेशन करो तो यू नो कि वैल्यू ठीक भी है कि गलत है। अच्छा, देन द नेक्स्ट thing that you need to do is what is enthalpy change of hydration. So delta H hydration is कि it's you have a gaseous ion, उसको पानी में मिक्स किया and it ends up forming aqueous ion. अच्छा, रिमेंबर कि whenever an ion is mixed in water तो वो खाली बस पानी के अंदर घूम नहीं रहा होता, वो पानी को एक्चुअली उसके साथ डेटिव बॉन्ड बनाते हैं। हमने ट्रांजिशन मेटल्स में किया भी था कि अगर सोडियम आयन को पानी में डालो ना तो वाटर मॉलिक्यूल्स दे हैव अ नेगेटिव साइड एंड दे हैव अ पॉजिटिव साइड, दे आर लाइगेंड्स, उनके लोन पेयर्स होते हैं। तो द नेगेटिव पार्ट वुड गेट अट्रैक्टेड टू द सोडियम आयन, तो वो हर साइड से सराउंडेड होगा। सो दे गोइंग टू एंड अप फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्सेस। तो इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है कि गैसियस सोडियम आयन यानी कि अकेला सोडियम आयन पानी में जाता है और पानी के साथ बॉन्ड्स बना देता है। सो दिस इज बॉन्ड फॉर्मेशन दैट्स हैपनिंग। एंड इफ दिस इज बॉन्ड फॉर्मेशन तो दिस वुड बी एक्सोथर्मिक, नेगेटिव, क्योंकि जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज्ड। सो इट्स ऑलवेज रिलीज्ड। अच्छा, और इसका ये कि इट्स सपोज टू बी 1 मोल, दिस हैज टू बी 1 मोल। ठीक है, enthalpy of hydration by definition is for 1 mole of gaseous ion. So that's enthalpy of hydration. What else? और कौन सी definition थी? You had another thing which was electron affinity. Now electron affinity is कि इसमें क्या होता है electron affinity? It's the opposite of ionization energy. इसके अंदर ना electrons are being gained. So you have 1 mole of gaseous atom or ion, and it ends up gaining 1 mole of electrons. ठीक है, it ends up gaining 1 mole of electrons, और जब वो 1 mole of ऐसा ends up gaining 1 mole of electrons, and obviously जब वो 1 mole of electron gain करेगा तो उसका नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, it's going to form 1 mole of
gaseous -1 ion. और मतलब फिगर दिस आउट कि अगर वो पहले से ही आयन है, फॉर एग्जांपल दिस इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन, सो ई डॉट ए ऑफ ऑक्सीजन एटम इज गोइंग टू बी, उसकी इक्वेशन क्या होगी कि ऑक्सीजन का एटम होगा और वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वो ऑक्सीजन का 1 आयन बन जाएगा. Then there's going to be an electron affinity of oxygen -1 gases. तो उसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन का -1 gaseous आयन होगा, it would gain 1 electron and it would form oxygen -2 आयन. ठीक है, आयन तो खैर नहीं लिखा होगा, स्टेट लिखी होगी कि दिस वुड बी अ gaseous आयन. तो ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में बस किसी भी चीज की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात हो रही है तो वो उसका जो गैशियस एटम है ना या आयन है, दैट्स गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन. अच्छा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज यूजुअली डिस्कस्ड फॉर सब्सटेंसेस दैट नेचुरली गेन इलेक्ट्रॉन्स. मतलब ऑक्सीजन हमेशा -2 आयन बनाता है, क्लोरीन -1 बनाता है. तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज ऑलवेज व्हेनेवर यू somebody talks about इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, सो दे बेसिकली रेफरिंग टू, मतलब सोडियम की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की कोई बात नहीं करेगा. अच्छा, फिर इसमें ये कि द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज एक्सोथर्मिक, यानी उसमें एनर्जी नहीं चाहिए होती. ऑल द वर्क डन इज बाय द सब्सटेंस इटसेल्फ. मतलब ऑक्सीजन का एटम है, बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लाइक्स टू गेन इलेक्ट्रॉन. वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ता है, पुल करके अपनी तरफ लेके आता है. ऑल द वर्क डन इज डन बाय ऑक्सीजन एटम इटसेल्फ. और उसको खींच के अपने साथ जोड़ लेते हैं, ऑक्सीजन 1 बन जाता है. सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज एक्सोथर्मिक. द रेस्ट आर ऑल एंडोथर्मिक. So the rest are all endothermic as there is repulsion. So there's going to be repulsion between negative ion and electron. अच्छा, why is there going to be repulsion? कि अगर मैं बाकी उसके बाद ऑक्सीजन जब पहला इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, वो खुद गेन कर लेगा. जब ऑक्सीजन -1 बन जाएगा ना, और फिर वो दोबारा इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेगा, बिकॉज इट्स अ नेगेटिव आयन एंड बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो नेगेटिव, तो ये दोनों तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे. सो इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर ऑक्सीजन टू गेन अनदर इलेक्ट्रॉन. तो ये एंडोथर्मिक हो जाएगा. इट नीड्स एनर्जी. मतलब किसी को जबरदस्ती बाहर से इलेक्ट्रॉन इसको गेन करवाना पड़ेगा. इसके लिए गेन करना मुश्किल हो जाएगा. somebody else has to do the work. तो oxygen gains the first electron very easily, but doesn't gain the next electron. That kind of becomes difficult for it. ठीक है, ये क्लियर है महफूज, अब्दुल्ला, आयशा, इज दिस क्लियर? Yes, sir. अच्छा, ये सारा हमने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के ऊपर कर लिया. नाउ वी प्रीटी मच डन विद द डेफिनेशंस. अब इसके ऊपर ना पहले तो एक काम करना है, व्हिच इज बॉर्न हेबर साइकिल. ठीक है, लेट्स रिवाइज दैट कि व्हाट इज द बॉर्न हेबर साइकिल, एंड इट्स ऑलवेज द सेम साइकिल. ठीक है, ये आपके दिसंबर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो इसके ऊपर लाजमी आएगा. ठीक है, तो बॉर्न हेबर साइकिल इज, it's always for an ionic compound. So it's for ionic compounds only. अच्छा, है क्या बॉर्न हेबर साइकिल? द थिंग इज कि you start off with NaCl का ड्रॉ करते हैं. It's always better to start off with enthalpy of formation. ठीक है, solid, gas, solid. अच्छा, why is this enthalpy of formation? कि 1 mole NaCl फॉर्म हो रहा है और अपने एलिमेंट से फॉर्म हो रहा है. It's being formed from its elements which are in their standard states. मतलब रूम टेम्परेचर पे जो उनकी states होती हैं उनसे वो फॉर्म हो रहा है. So this is enthalpy of formation of NaCl. तो आपने बेसिकली करना क्या, आपने सॉल्ट बनानी है NaCl. सोडियम और क्लोरीन आपके स्टार्टिंग मटेरियल है.
तो अब आपने ना स्टेप वाइज जाना है कि स्टेप वाइज इफ यू स्टार्ट कि Na और Cl क्लोरीन जो है ना वो स्टार्टिंग मटेरियल है, तो उससे NaCl किस तरह बनाना है। द फर्स्ट थिंग इज कि आप एटमाइज करोगे। व्हाट यू गोइंग टू डू इज, ये जो सोडियम का एटम है ना, ये सोडियम मेटालिक है, मेटल है सोडियम का, छोटा सा पीस होगा सोडियम का। तो सबसे पहले तो उसको आप ब्रेक करो, उसके एटम्स फ्री अप करो, तो सोडियम के गैसेस एटम्स बन जाएंगे। दिस वुड बी कॉल्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सोडियम। क्लोरीन को कुछ भी नहीं किया, क्लोरीन एज इट इज गैस। एक वो बस मसला है कि दिस इज नॉट बैलेंस्ड, दिस शुड हैव बीन हाफ क्लोरीन, क्योंकि वहां पे एक ही Cl है, तो यहाँ पे भी हाफ क्लोरीन है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट, सोडियम के बॉन्ड्स टूट गए, क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं, एटम्स जुड़े हुए हैं, सो यू हैव टू ब्रेक दोज बॉन्ड्स एज वेल। तो अगले स्टेप में ना क्लोरीन के भी बॉन्ड्स तोड़ दो, सोडियम के तो तोड़ चुके हो पहले ही, और क्लोरीन के भी बॉन्ड तोड़ोगे तो क्लोरीन का गैसियस एटम बन जाएगा। ये आपके पास आपको मिलेगा बॉन्ड एनर्जी से ऑफ द Cl बॉन्ड, लेकिन उसको मल्टीप्लाई बाय हाफ करना है क्योंकि आप आधा मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हो, ठीक है। सो इट्स गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड बाय हाफ। अच्छा, ये जब हो जाएगा फिर आपको आयनाइज करना है, क्योंकि NaCl में तो सोडियम आयन है, तो Na would lose electron, gaseous +1 बन जाएगा, lost 1 electron, और Cl as it is. This is the first ionization energy of Na. फिर अगले स्टेप में वो जो इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया, that would be gained by Cl. This would be known as electron affinity of Cl. और फिर लास्ट स्टेप है कि gaseous ions they combine to form the ionic lattice, and that is your lattice energy. ठीक है, हर दफा किसी भी ionic compound के लिए the cycle would be made in exactly the same way. ठीक है, it's going to be the same cycle. You start off with enthalpy of formation, फिर एलिमेंट्स से बारी बारी, पहले एलिमेंट्स को तोड़ो, एटम्स बनाओ अलग अलग, फिर उनको आयंस में कन्वर्ट करो, फिर वो आयंस जब जुड़ जाएंगे तो वो फिर आयोनिक लैटिस फॉर्म करेगा। ठीक है, क्लियर है? महफूज, आयशा, अब्दुल्ला, इज दिस क्लियर? Yes, sir. चलो ठीक है, कल हम इस पे ना क्वेश्चंस करेंगे, तो कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? चले, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, sir.